No, no, no. Hello, you can hear me? Hmm. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. मैं डॉक्टर शिल्पा गांधी हूँ and I'm a lead consultant at thoracic surgeon working with KIMS-Kingsway hospitals, Nagpur. आज का हमारा टॉपिक है यूनिपोर्टल वैट्स अ रेवोल्यूशन इन thoracic surgery. So what is VATS? है ना, VATS is इन लेमैन टर्म, अगर मैं इसको एक सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो इट्स नथिंग बट अ की होल थोरासिक सर्जरी। छोटे इसमें, या हम उसको दूसरे टर्म्स में थोरैकोस्कोपी भी कहते हैं। में चेस्ट पर या छाती पर, पेशेंट के छाती पर छोटे होल्स करके उसमें फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डालकर और उसमें से एक होल में से कैमरा डालकर, है ना, तो छाती के अंदर के ऑर्गन्स को, फेफड़ों को, उसके आसपास की जगहों को विजुअलाइज उन्हें देखा जाता है। एंड अगर उसमें जो भी बीमारी है उनको उसी होल द्वारा सारे इंस्ट्रूमेंट्स डालकर उसे ठीक किया जाता है। जैसे डिकॉर्टिकेशन, जैसे लोबेक्टमी यानी फेफड़ों का कुछ हिस्सा निकालना, वेज रिसेक्शन सेम, फेफड़ों का एक छोटा पार्ट निकालना, हाँ, या फिर अन्न नलिका इसोफेगस उसकी सर्जरीज, इस तरह के जो केसेस है वो उन्हें कुछ 3-4 स्मॉल 5 मिलीमीटर के होल्स के थ्रू वो ऑपरेशन कर दिया जाता है। इसको हम मिनिमली इन्वेसिव थोरासिक सर्जरी कहते हैं, MITS। इसके फायदे क्या है, क्यों करते हैं? पहले के ज़माने में, मतलब आज से 20 साल पहले तक, 20-25 साल पहले तक के सबसे कॉमन तरीका था इन फेफड़ों की बीमारियों का या चेस्ट की बीमारियों का इलाज करने का, वो था एक 15 से 20 सेंटीमीटर का बड़ा सा कट चेस्ट पर देना, और पसलियों को फिर फैला, मतलब दूर करके जगह बनाकर सारा ऑपरेशन उतने 20 सेंटीमीटर कट से किया जाता था और फिर उसको मतलब बंद कर देना। ऐसे मरीज, एक्चुअली ऐसे ऑपरेशन थोड़े मतलब इस तरह के अप्रोच में समय भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है और मरीज को लंबा रुकना पड़ता था हॉस्पिटल के बाद में, तो इट एडेड टू द फाइनेंशियल बर्डन एज वेल ऑफ द पेशेंट, then longer hospital stay, एंड यस ऑफ कोर्स पेन जो बहुत ज़्यादा दर्द भी, मरीज को काफ़ी समय तक के दर्द भी होते थे थोरैकोटोमी के बाद में, इसको हम थोरैकोटोमी अप्रोच कहते हैं। और इसको द complication, one of the complication was like post thoracotomy syndrome. So there were a lot of, I would say, a lot of disadvantage. Apart from having the advantage, it's a very easier approach for any surgeon working in any kind of a setup, है ना? And whether it is a small hospital or a bigger institutions. इसके इन सबके कॉम्प्लिकेशंस को, साइड इफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, एंड देन वी स्टार्टेड रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द इंसिजन्स, एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग इट बाय मल्टीपल होल्स। ये टेक्निक वेस्ट में काफ़ी कॉमन है ना? ब्रिटेन से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स से लेके साउथ ईस्ट एशियन नेबरिंग कंट्रीज में ये टेक्निक काफ़ी कॉमनली एम्प्लॉय होती है। इसको हम टेक्निकली मल्टीपोर्ट वैट्स कहते हैं। हाउएवर, आज का जो हमारा है मेन टॉपिक इज यूनिपोर्टल वैट्स। अगर मैं उसको कहूँ तो व्हाट इज यूनिपोर्टल? यूनिपोर्टल मीनिंग ये सारे ऑपरेशंस हम एक सिंगल छेद, एक 2 से 4 सेंटीमीटर का छेद करके चेस्ट में, और सारा ऑपरेशन हम उसी छेद द्वारा किया जाए, यानी कि सिंगल इंसिजन थोरैसिक सर्जरी और uniportal thoracoscopic surgery. So it is a single incision. It is a concept of single incision surgery. मतलब it is minimally invasive. So ऐसे इस तरह के ऑपरेशंस के बहुत फायदे, इस तरह के अप्रोच के बहुत फायदे हैं। ऑलमोस्ट अब सारे ऑपरेशंस एक्चुअली इसके इसी सिंगल पोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, जो हम बड़े कट के साथ करते थे।
ऐसे इसके और ज़्यादा फ़ायदे हैं मल्टीपोर्ट के, मतलब जो मल्टीपल होल्स है, मल्टीपोर्ट वैट्स, उसके ऊपर इसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं इन द फॉर्म ऑफ लेसर हॉस्पिटल स्टे, then the lesser pain, I will say lesser pain even after the surgery. पेशेंट तुरंत ऑपरेशन के दिन ही कुछ घंटों के बाद मरीज एक्चुअली बेड में बैठना शुरू कर देते हैं, एंड कुछ कुछ मरीज एक्चुअली मतलब चलना भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो इनको हम कहते हैं एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी और ईरास। सो mobilization of the patient is possible even on the day of the surgery itself. Hospital stay after the surgery is massively reduced, उनको वो बहुत कम हो जाता है। हमारे सारे मरीज यहाँ मोस्टली थर्ड डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो इस तरह के when we are doing single port VATS, उसके बाद में majority of these patients they get discharged on third day. Yes, so financial, all these in Indian concept, I will say in the Indian scenario, they reduce the burden of, they reduce the financial burden on the patient. जो कि the entire healthcare actually is, the entire healthcare of India is actually functioning in the way that it is giving maximum benefits to the patient and to the doctor. Yes, so that is the gist. Coming to the origin of the uniportal VATS. Origin मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत mostly यूरोप से हुई. I will say it was a European technique, and I think it started as at least 20 years back. लेकिन पिछले 10 साल में it has gained momentum like anything. इसीलिए इसको कहा जाता है a revolution. It's a revolution in a keyhole thoracic surgery, uniportal VATS. Yes. So common operations, हम कौन से operations कर सकते हैं uniportal VATS के through? एक तो है hyperhidrosis surgeries. Hyperhidrosis मतलब excessive sweating of face, palms, soles, axilla, है ना? तो कुछ young patients या फिर young individuals and extremely anxious, stressful individuals, इनमें ये common होता है. So we do surgery for hyperhidrosis by uniportal VATS. फिर empyema, TB complications, TB and TB complications in the form of empyema, यानी पस, फेफड़ों के आसपास पस जमा हो जाना, तो उसके ऑपरेशंस भी हम यूनिपोर्टल वैट्स द्वारा करते हैं। या फिर टीबी के बाद में फेफड़ों के अंदर में जख्म हो जाना, जैसे हम उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं, देन एस्परगिलोमा कहते हैं, तो इसमें फेफड़े का कुछ हिस्सा निकालना होता है, तो वो हम उसकी भी ऑपरेशंस यूनिपोर्टल वैट्स द्वारा कर सकते हैं। देन फेफड़ों के ऊपरी सतह पर एयर बबल्स बन जाना, जो बहुत कॉमन है इंडियन सिनेरियो में, इसको हम बुल्ले कहते हैं, या सो इनके बुलेक्टमी ऑपरेशंस, ये सब तो ये भी हम यूनिपोर्टल वैट्स द्वारा कर सकते हैं। देन फेफड़ों के और भी जैसे जटिल ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स फेफड़ों के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, जैसे स्लीव रिसेक्शन है ना, एयरवे ऑपरेशंस, ये सब भी यूनिपोर्टल वैट्स द्वारा आसानी से हो जाते हैं। एंड पेशेंट का, और कैंसर सर्जरीज का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट रिक्वायरमेंट होता है कि पूरा कैंसर निकलना चाहिए, द क्लियरेंस हैज टू बी जीरो. I mean 100% clearance with a zero residual tumor. So this also can be easily accomplished, very easily achieved by means of uniportal VATS. Then फेफड़ों को, पेट और छाती को डिवाइड करने की एक मसल होती है डायफ्राम, तो कभी उसकी पैरालिसिस हो जाते हैं, सपोज डायफ्राम पाल्सी या फिर उसका डायफ्राम इवेंट्रेशन, तो उसको सिलने के लिए भी ये बहुत आसान तरीका है, कम रिक्वायरमेंट्स में ये ऑपरेशन जल्दी हो जाते हैं, मतलब डायफ्राम रिपेयर या डायफ्रामेटिक सर्जरीज कैन आल्सो बी इजीली डन बाय uniportal VATS. Yes.
And there are a lot of other complications, a lot of complications of other surgeries which can also be tackled very easily with uniportal VATS. Then trauma, छाती में पसलियाँ अगर पसलियाँ ब्रेक हो गई हो, अंदर फेफड़ों के आसपास ब्लड जमा हो गया हो, तो उसको क्लियर करने के लिए यूनिपोर्टल वैट्स अगेन वेरी इजी मीडियम, very easy surgical approach. And yeah, yes, our team and our center is a leading center. You can say a center of excellence in uniportal VATS surgery. जैसे मैंने बताया, मैं पहले भी कह रही थी कि the origin was in European region, and slowly in the last 10 years it has gained momentum like anything, and now it is almost a second nature. Every other hospital in a Southeast Asian country, or in especially in China, then Hong Kong, and Europe. So almost every hospital of Europe is actually employing uniportal VATS for their day-to-day practice. For their day-to-day practice. In India also, we are proud to say that we're the first hospital in the central part of India to have been very, to have been employing this technique in and out daily basis. So yeah. एक दो और एडवांटेजेस मैं ये बोलूँगी, जो आज के हमारे जो यंगर स्टूडेंट्स होते हैं, जो यंगर ट्रेनीज या फिर अर्ली करियर सर्जन्स, इनके लिए एक अच्छा माध्यम है ये, बिकॉज ये it is easy to learn, it is easy to replicate, and it is easy to reproduce. So आप अगर suppose आप you're sitting in Bombay, but you have a patient in, for example, Chennai, and you want to operate there, instead of bringing the patient all over to Bombay, so you can travel with a particular set of your own instruments, and you can easily perform the surgeries over there with minimum requirement. मतलब इसके setup में ज़्यादा requirement भी नहीं लगता है, operation setup and all में. So the surgeon, and it is surgeon friendly. It's the most surgeon friendly approach. Or if you want, you can travel to Egypt and go and operate there. If you can travel to Pakistan and go and operate there. So you can reproduce this technique very easily to other countries, to other centers, to other regions, to other cities, and the younger people can get trained very easily. इसको हम technical language में कहते हैं learning curve. Learning curve is the evidence, मतलब जो data है, scientific data, उसने already ये साबित कर दिया है कि the learning curve is much lesser than while performing a multi-port VATS. So yes, it's a very established technique and have been established with all, and has been user friendly to all the societies all across the world. Yeah, so I think we're open for questions from the audience, and somebody has asked, how will surgery affect my breathing? I think it's a good question. It's a very common question. So फेफड़ों में कुछ हिस्सा जो निकालना होता है, मोस्टली वो पार्टिसिपेट नहीं करता है ब्रीदिंग में. फॉर एग्जाम्पल COPD सर्जरीज या एम्फिजीमा सर्जरीज, सो उसमें ऑलरेडी जो खराब हिस्सा होता है जो हम निकालते हैं, वो वैसे भी ऑक्सीजनेशन में या ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है. सो व्हेन वी टेक इट आउट, इट एक्चुअली इम्प्रूव्स योर ब्रीदिंग. एंड so the breathing capacity is combined by both the lungs. It is a combination of both the lungs. So if we take out like 5% of the lungs, so the remaining 95% is sufficient to compensate for the loss of the 5%. In India, a lot of patients, they are very advanced TB patients, जिनमें पूरा एक फेफड़ा निकालना पड़ जाता है.
तो उसके लिए हम मरीज को तैयार करते हैं, उनका फेफड़े की उनकी ब्रीदिंग टेस्ट करते हैं, एंड देन when we find out that portion or that whole lung is not adding to the breathing efforts of the patient, we remove it. इसको हम pneumonectomy कहते हैं. However, आप ये घबराइए नहीं, मतलब एक फेफड़ा निकालने के बावजूद मरीज दूसरे फेफड़े पर आराम से पूरी अपनी बाकी बची हुई जिंदगी बिना कुछ तकलीफ के जी सकता है. And it is a very common procedure. It is not that uncommon in the Indian scenario, and we have not seen any breathing defects or breathing illnesses even after a pneumonectomy. मैं ऐड करना चाहूंगी ये क्वेश्चन के बेनिफिट. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई वुड लाइक टू एलैबोरेट इट. अगर जब हम ये यूनिपोर्टल वैट्स यानी कि जो सिंगल पोर्ट थोरैकोस्कोपी हम जो कह रहे हैं उससे जब करते हैं हम जब ये जो ब्रीदिंग एक्चुअली इज आल्सो अफेक्टेड बाय द पेन. व्हेन हम जब कट लगाते हैं चेस्ट पर, that produces pain even after the surgery, and that also affects the breathing. लेकिन हम जब ये छोटे कट्स लगाते हैं या फिर दूरबीन द्वारा हमें ऑपरेशन फुलफिल कर देते हैं या कंप्लीट करते हैं, that doesn't cause any impact or that doesn't affect the breathing. That is one of the biggest advantage. कि फेफड़े निकालने के बाद भी जो कट है, ऑपरेशन किस तरह से हम कर रहे हैं, कौन से अप्रोच से कर रहे हैं, that even that can affect the breathing of the patient for some time period after the surgery. However, if you're doing it by keyhole, even that you get the advantage of like less pain, advantage of less pain, and hence a better recovery or early recovery even on the breathing aspects of the patient. Yes, so I think I've got one question was, how do you approach patient selection for uniportal VATS surgery versus other surgical technique? Again, a very good question. Uniportal VATS, I would say almost in all the cases you can do, almost in all, except अगर patient का हाईली एडवांस स्टेज ऑफ एम्पाइमा, जहां जिसको हम फाइब्रोथोरैक्स कहते हैं. सो अगर फाइब्रोथोरैक्स हो चुका है, मतलब कि चेस्ट इतना फ्यूज या फ्रोजन हो चुका है कि आप पसलियां ही दूर नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप कैमरा अंदर नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि जगह ही नहीं है अंदर, क्योंकि चेस्ट इतना फ्रोजन हो गया है. सो दैट इज डेफिनेटली नॉट अ गुड केस for uniportal VATS. उन केसेस में we do not recommend कि आप इनको की होल द्वारा कीजिए. ऐसे जटिल केसेस में आपको बड़े ऑपरेशंस ही करने पड़ते हैं. सेकेंडली, लंग ट्रांसप्लांट आज भी हम कट लगा कर करते हैं दोनों चेस्ट में, है ना. अभी क्योंकि ट्रांसप्लांट सर्जरीज आर वेरी फाइन सर्जरीज, उसको हम की होल द्वारा नहीं करते हैं. इट इज नॉट एडवाइजेबल. And of course, the surgeon has to be competent. The surgeon has to be experienced. उनका एक proper, मतलब surgeon experience is also required. Then institute, it has to be done in I will say in a tertiary referral center, or an institute which is well equipped to handle the anesthesia, well equipped to have a good ICU, well equipped in terms of the good instrument. The good OT setup, I will say. And of course, patient choice is very common. But otherwise, I will say mostly advanced cases of advanced lung cancers, जो बड़े जो lung cancers हैं, probably उनका clearance achieve करने के लिए it's better that you open, या फिर जिसमें कैंसर सर्जरी के साथ साथ कुछ वास्कुलर का भी कुछ, जैसे रिकंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल एसवीसी रिकंस्ट्रक्शन, हार्ट का कोई सर्जरी कंबाइंड है. सो बेटर इज यू जस्ट क्लब एंड बोथ द ऑपरेशंस एंड मेक अ बिग कट, और a semi big cut, I'll say. I have a second question, and that is, hello doctor, is there any eligibility required for the patient for this VATS? I think ये मैंने काफी हद तक कवर कर दिया है, and that is in the form of a selection criteria. So selection criteria for uniportal VATS, or for any VATS, it would be almost the same. We have partly covered it actually. Then are there any limitations or challenges associated with uniportal VATS? जैसे कि मैंने कहा है कि it should be,
you need to have an experience first of it. You need to have an orientation for it. The surgeon has to have an experience and orientation about the surgery, patient choice, then a well-equipped center, or a tertiary referral center. These are most common limitations. Surgical challenges भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कौन से patients हैं जिसमें हम ये नहीं करेंगे. So these are all mostly they're advanced cases, extremely advanced cases of cancer and extremely advanced cases of TB, fibrothorax, etc. So in May it will be difficult, and yeah, yes. How soon can patient return to their normal activities after undergoing uniportal VATS? जैसे कि मैंने कहा था ERAS, uniportal VATS is highly facilitated, या उसका benefit सबसे ज़्यादा तब होता है जब उसको ERAS के साथ combine करो. Enhanced recovery after surgery. It's a patient pathway, or it's a patient management after the surgery. Early recovery is as early as the patient can get up from the bed on the day of surgery, just after a few hours itself. हमारे यहाँ patients, they start getting fed, मतलब we start feeding them orally in like after 2 hours, immediately after the surgery, जब वो इसका anesthesia wave off, or wave off हो जाता है, anesthesia effects. And we also start mobilizing the patient like after 3 to 4 hours after the surgery. There is a concept of daycare non-intubated uniportal VATS, or knee VATS, or is also called as tubeless VATS. इसमें मरीज को पूरा बेहोश भी नहीं करते हैं, उनको पूरा बेहोशी का जो ट्यूब होता है वो भी कम बेहोश करके, एंड दूरबीन द्वारा पूरा ऑपरेशन करके छाती में, मतलब there are no tubes at all. ना तो पेशेंट को यूरिनरी ट्यूब होता है, ना छाती में चेस्ट ट्यूब होता है. And these kind of patients are, in selected patients, they are in a position to take a discharge after 24 hours. And we have developed a program, or we have developed a pathway of a daycare surgery or a daycare VATS for at least patients for surgery of hyperhidrosis. So ये जो patients है ये same day घर भी discharge हो सकते हैं. So yes, I will say the recovery is as early as possible. The recovery is very quick, and जितने भी patients office were official, for resuming their professional workplace or professional activities, most of our patients, they resume in a week. They start driving in I would say 2 to 3 weeks, and they start diving or swimming. I recommend them to start swimming and do heavy strenuous exercises in like 6 weeks, 6 to 8 weeks time. So the recovery is much faster as compared to thoracotomy approach, or as compared to even multi-port VATS. किसी ने पूछा what are the possible long-term or late effects of having this surgery? I would say, so long-term effects, I would probably quote it or rephrase it as are there any long-term side effects of having this surgery? So if you're asking possible long-term side effects, I would say no, there are no side effects at all, क्योंकि ये keyhole surgeries हैं, and keyhole surgeries are in. Because the technology has advanced in such a way that if the same results are अगर same result हमें keyhole surgery द्वारा मिल सकता है, तो हम लोग क्यों traditional approach age old approach क्यों opt करें? So a lot of people, they patients, they come to us and they want or they demand to have a keyhole surgery. So yeah, that is it. I wouldn't say there are long-term side effects, but of course any surgery के जो भी benefits होते हैं, long-term good effects, that will be on a case-to-case basis, and they are definitely there. किसी ने पूछा है, are there any risks in choosing VATS, and is this for only for patients with some criteria?
I don't. So any surgery can have a risk. I don't think VATS particularly have a risk. But yes, कि अगर आप if you're if अगर कोई ऑपरेशन अगर जटिल ऑपरेशन है आप उसे वैक्स द्वारा कर रहे हैं so you should always explain the patient that there is an a small percentage of converting it to an open. मैं कभी अपने patients को I always keep my conversations open with the patients, and I always give them a small percentage of like 2 to 3% of getting it converted to an open thoracic surgery or an open surgery in the form of a thoracotomy. And this is just as this is a standard practice or in the standard conversation which we have with all sorts of all our patients for VATS, and that is in any part of the world. Really, how long the pain will be? कहते हैं patients 1-2 दिन रहता है, but then that pain is easily we can easily tackle that pain in the form of analgesics. हम उनको इंजेक्शंस देते हैं, पेन किलर्स के टैबलेट्स देते हैं डिस्चार्ज पर, और मैंने एक्चुअली अपने सारे पेशेंट्स में एक पेन पैच भी लगवाती हूँ. इसका असर 3 दिन तक चलता है एंड पेशेंट्स पेन फ्री रहते हैं टिल दे आर एडमिटेड विद अस. सो इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ब्रीदिंग. The more there is a pain in the chest, the more it affects the breathing of the patient. If you keep the patient pain free, the breathing efforts or the work of breathing is massively reduced. तो ऐसे में फेफड़े अच्छे से फूलते हैं, उनकी रिकवरी जल्दी होती है, और निमोनिया, पोस्ट ऑफ निमोनिया, टेलेक्टेसिस, इन सब के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं. जैसा कि I'm waiting for the questions, but meanwhile I think we'll utilize this time to talk about advancements or advances in VATS. So uniportal VATS यानी कि single port, so incisions तो हमने कम कर दिए है ना, so that is one advancement in the technology of VATS or thoracoscopy. But there are others, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ट्यूबलेस वैट्स और नॉन इंट्यूबेटेड वैट्स, यानी कि कम बेहोशी में भी ऑपरेशन, सेम ऑपरेशंस करके वही रिजल्ट अचीव करके पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करना. तो ये सारे स्टडीज ने बोला है कि रिकवरी इसमें और भी फास्ट होती है, क्विक होती है, अगर आपने पेशेंट का सिलेक्शन और चुनाव सही से किया हो तो. So yes, non-intubated VATS, I would say, is another modality of or it's another advanced technology or advanced technique. और भी है अभी, जैसे कि नेचुरल ओरिफाइस सर्जरी, सो नोट्स कहते हैं हम इनको. नेचुरल ओरिफाइस मतलब कि नोज द्वारा या ओरली हम ट्यूब डालकर लोबेक्टमी, हम उसको मतलब उसके फेफड़े की सर्जरी करे. ये सब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, इस पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर कि आने वाले कुछ समय में ये सब प्रैक्टिस में इन्हें लाया जाएगा आने वाले कुछ सालों में. So notes, and then there is another advancement, and that is it's also called needloscopic, यानी कि इसमें और भी इंस्ट्रूमेंट का साइज और भी छोटा हो जाता है, of the size of the needle, like 2 to 3 millimeter of instruments. They go inside the chest through 3 to 4 millimeter of holes. But well, of course, this is not a uniportal VATS, but it is an advantage or an advancement of the VATS per se. जैसे मैंने बोला था, what is somebody has asked, what is the follow-up care plan for patients post uniportal VATS surgery? Not really much, to be very honest. जैसे मैंने कहा, most of the patients, they go home 3rd day, sometimes 5th day, so an average I would say like maybe 3 to 5 days. They resume all their activities. We call them for the first visit in 2 weeks time. और अगर healing हो गया है घाव का, तो I just see them roughly once after 1 month. अगर cancer सर्जरीज है तो यस, कैंसर सर्जरीज अगर है तो वैट्स या कोई भी अप्रोच से करो, पर कैंसर सर्जरी का फॉलो अप केयर इज फार डिफरेंट देन एनी अदर लाइक नॉन कैंसर वैट्स सर्जरी.
So yes, उनका मैं pathway as per the underlying cancer they are dealt with. Yes, so that is it. Mm, yes, thank you for clarifications. Yes. Yes, so I think it was a good introductory, a live session on Uniportal VATS, जिसको हम simple language में मैं कहूँगी single incision thoracoscopic surgery. Central India में ये first time हम ला रहे हैं, and it is going to benefit the patient, surgeon, the hospitals in every possible way. So yes, thank you everyone. Thank you for your time and participation.